Good morning. You're watching the news here at CNN News 18. It's a Monday morning. We're about to take you through all of the country's stories this early in the morning. Our first story from right here in Delhi. जितने इसमें एलिगेशन लगाए हैं और भी जितने आप लगा सकते हो लगाओ, सबकी जांच कर लो। हमको पता है कि हमने बेईमानी नहीं की, तो आप प्रूव कैसे करोगे? कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हमको ये भी पता है कि आपकी कर क्यों रहे। उन्होंने स्वयं माना कि शराब घोटाले से वो डरते नहीं। तो मनीष सिसोदिया जी ने खुद माना है कि शराब में घोटाला भी हुआ है, लेकिन जवाब नहीं देते हैं अरविंद केजरीवाल, जो किंग पिन है। आपको रेड में कुछ नहीं मिला, आपको छापेमारी में कुछ नहीं मिला, तो हताश होकर नौटंकी कर रहे हैं आप। Our top story, as we promised, from right here in the capital. Sources have told CNN News 18 that the CBI, the Central Bureau of Investigation, has issued a lookout circular against 8 private individuals. The CBI has not, however, issued one of those notices against the Delhi Deputy Chief Minister, Manish Sisodia, as of now. This is as was earlier alleged yesterday. Meanwhile, the political war of words over Delhi government's now recalled liquor excise policy intensified yesterday, with the BJP, the Bharatiya Janata Party, saying that the roots of the alleged scam will lead to Chief Minister Arvind Kejriwal, even as the Aam Aadmi Party reiterated its claim that the action by the CBI against the Delhi government was a result of the BJP fearing Aam Aadmi Party's national gains. First, yesterday, my colleague Rupashri Nanda in the afternoon spoke to Manish Sisodia, who's right at the center of this controversy. Take a look at that interview. सर, आज सुबह आपके अगेंस्ट एक लुकआउट नोटिस इशू करा गया. यू हैव रिस्पॉन्डेड वेरी एंग्रीली टू दैट. नहीं, मुझे तो हंसी भी आ रही है कि क्या नौटंकी लगा रखी है। मेरे घर सीबीआई की रेड करा ली 14 घंटे, आपको कुछ नहीं मिला, आपकी रेड फेल हो गई। अब आप कह रहे हो लुकआउट नोटिस। क्या लुकआउट नोटिस? मैं कहीं भाग थोड़ी रहा हूँ, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, अपनी घर में बैठा हूँ। आप मुझे बताओ कहाँ जाना है, कहाँ आना है, मैं जाऊँगा। मैंने पहले ही कह दिया है कि इस जांच में कुछ नहीं निकल सकता, क्योंकि हमने कोई बेईमानी नहीं की, कोई गड़बड़ नहीं हुई, इसलिए हमें पूरा कॉन्फिडेंस है। इसलिए हमने कहा पूरी जांच में सहयोग करेंगे। हम भी चाहते हैं जांच जल्दी से खत्म होके पूरा ये इनका जो एक्सपोज है ना, जो शोर मचाया है इन्होंने, वो सब एक्सपोज हो जाए कि ये क्यों कर रहे हैं सब। मनीष जी, ये बताइए, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि जांच में कुछ भी नहीं निकलेगा, लेकिन एफआईआर भी तो सीरियस है. एफआईआर में भी तो मेंशन ये करा गया कि यू फ्रेम्ड एंड इम्प्लीमेंटेड द पॉलिसी विदाउट टेकिंग अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. आरोप तो बीजेपी बहुत लगा रही है, बहुत तरीके की बात कर रही है। ये कह रहे हैं जी आपने 8,000 करोड़ का घोटाला किया, कभी कहते हैं 11,000 करोड़ का घोटाला किया, कभी कहते हैं 144, 30 करोड़, पता नहीं कितनी फिगर डालते हैं। फिर जब एफआईआर करते हैं तो उसमें लिखते हैं एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को कुछ पैसा दिया हुआ है वाइट में, वो मनीष सिसोदिया का घोटाला है, वो भी 1 करोड़ रुपए। तो अब इधर उधर की इतनी सारी बात करने के बाद ये एफआईआर बनाई है ना, कर लें, सब जांच कर लें। जितने इसमें एलिगेशन लगाए हैं और भी जितने आप लगा सकते हो लगाओ, सबकी जांच कर लो। हमको पता है कि हमने बेईमानी नहीं की, तो आप प्रूव कैसे करोगे? कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हमको ये भी पता है कि आपकी कर क्यों रहे हो। हम ये जानते हैं कि आप भ्रष्टाचार की जांच में इंटरेस्टेड नहीं है। हम ये जानते हैं कि आपका एक्साइज की किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका एक्साइज से लेना देना होता तो आप गुजरात में खड़े होते, जहाँ 10,000 करोड़ की चोरी हर साल हो रही है और आपके लोग कर रहे हैं, जहाँ हुज ट्रेजेडी से लोग मर रहे हैं। आपका अगर भ्रष्टाचार में इंटरेस्ट होता तो आज सीबीआई और ईडी वहाँ रेड डाल रही होती, जहाँ प्रधानमंत्री जी के 5 दिन के उद्घाटन के अंदर हजारों करोड़ रुपए की सड़क चकनाचूर हो गई, धस गई बुरी तरह से। आज उसमें इनका नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि घोटाले में, एक्साइज में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनका केवल एक इंटरेस्ट है अरविंद केजरीवाल के शिक्षा स्वास्थ्य के काम को कैसे रोकना है। अरविंद केजरीवाल को इन्होंने इतनी रोकने की कोशिश की है, लेकिन वो काम किए जा रहे हैं, वो देश के नंबर 1 बनाने पे काम किए जा रहे हैं। मोदी जी 24 घंटे काम किए जा रहे हैं, मैं सीबीआई कहाँ डालूं, मैं ईडी कहाँ डालूं, मैं सरकार किसकी गिरा दूं। मोदी जी 24 घंटे ये सोचते हैं, अरविंद केजरीवाल 24 घंटे वो सोचते हैं कि देश की शिक्षा कैसे ठीक की जाए। मनीष जी, आपका रेस्पॉन्स सोफा टू दिस क्राइसिस बहुत पॉलिटिकल है, लेकिन विपक्ष का ये लगातार आरोप है आपके ऊपर कि आम आदमी पार्टी का कोई भी लीडर स्पेसिफिक्स के ऊपर आंसर नहीं दे रहा है। लाइक 144 करोड़ रुपीस का माफी क्यों हुआ,
30 करोड़ रुपीस आपको वापस क्यों देना पड़ा, वो सब के ऊपर आप लोग बात नहीं कर रहे हैं। वो एफआईआर तो इन्होंने लिखवाई है ना। इस एफआईआर में इन्होंने लिखा है कि सोर्सेज कह रहे हैं कि ए कंपनी ने बी कंपनी को बैंक से 1 करोड़ रुपए दिए हैं, वो मनीष सिसोदिया का भ्रष्टाचार है। उसकी जांच कर लेगी अब सीबीआई। करवा लो जांच, आप करवा ही रहे हो। अब मैं इसमें स्पेसिफिक क्या बताऊं? स्पेसिफिक मैं जानता हूं ना। स्पेसिफिक ये है कि प्रधानमंत्री जी जिस सड़क से चल के गए, हजारों करोड़ की जिस सड़क का उद्घाटन किया, आज तक उसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं शुरू हुई? वो कचरे के ढेर में बदल गई सड़क। 5 दिन के अंदर अंदर प्रधानमंत्री के उद्घाटन के देश की बदनामी हुई। उसमें नुकसान नहीं हुआ है देश का, वहां नुकसान हुआ है देश का। वहां बेइज्जती हुई है देश की कि प्रधानमंत्री जिस सड़क का उद्घाटन करता है वो 5 दिन के अंदर अंदर ढह जाती है और प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते हैं। प्रधानमंत्री चूं तक नहीं बोलते हैं, एक ट्वीट तक नहीं करते हैं कि मैं इसकी जांच कराऊंगा। ये बात साफ बताती है कि प्रधानमंत्री जी 24 घंटे इसमें लगे रहते हैं कि सीबीआई किसके घर भेजनी है, ईडी किसके घर भेजनी है, सरकार किसकी गिरानी है, आज मनीष सिसोदिया को नोटिस, आज मनीष सिसोदिया के यहाँ रेड। ये प्रधानमंत्री का काम रह गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मनीष जी, आप हमारे दर्शकों को ये क्यों नहीं बताते कि आपको 144 करोड़ की माफी क्यों करनी पड़ी, वो बता दीजिए। कौन सी माफी है? अब वो गलत है, गलत है तो एफआईआर में क्यों नहीं है? गलत है तो उसका जिक्र होना चाहिए ना। पर करो, उसकी भी जांच करो ना, हर चीज की जांच करो। मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि मनीष सिसोदिया, मेरा दावा है कि इस पॉलिसी में कोई बेईमानी नहीं हुई, ना इसके बनाने में ना इम्प्लीमेंट में। और ये एफआईआर भी इस बात का सबूत है, और मेरे घर हुई रेड इस बात का सबूत है। इस एफआईआर में भी आप लिख रहे हो कि जी 1 करोड़ का 2 कंपनियों के बीच व्हाइट का लेन देन मनीष सिसोदिया का घोटाला है। ठीक है, कर लो, उसकी भी जांच कर लो, वो भी साफ हो जाएगा। लेकिन अब आप हमें ये बताओ कि आप 2024 से पहले अरविंद केजरीवाल जी को रोकने के लिए इतने बेताब क्यों हो? जरा खुल के बोलो ना, खुल के बोलो कि हमें अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। खुल के बोलो कि आज देश में ये क्वेश्चन खत्म हो गया है कि मोदी वर्सेस हु। आज देश में लोग कहने लगे हैं कि अब हम अरविंद केजरीवाल को मौका देखना चाहते हैं। एक मौका अरविंद केजरीवाल को देंगे। क्यों? क्योंकि इस आदमी के पास में काम करने की ताकत है। ये आदमी काम करता है, ये बेरोजगारी पे, महंगाई पे बात करता है, ये शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे बात करता है। इसलिए आज अरविंद केजरीवाल जी को मौका देंगे। उसके ऊपर हम आएंगे एक थोड़ी देर में। बीजेपी का ये आरोप भी है कि अगर आपका एक्साइज पॉलिसी इतना शानदार था एंड आपने डिफेंड किया इवन यस्टरडे इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो इसको आपको वापस क्यों लेना पड़ा? बीजेपी बताए ना इस बात को, तो कि बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के एलजी ने खुद मंजूर की गई पॉलिसी को 2 दिन पहले क्यों यू टर्न लिया? उस पर खुद की मंजूर पॉलिसी पे बीजेपी ने उनसे यू टर्न क्यों लिवाया? उसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही है? ये बताए ना बीजेपी। मैं जब सीबीआई को चिट्ठी लिख रहा हूं कि साहब ये घोटाला हो गया, देखो इसकी वजह से सरकार को नुकसान हो गया, उसकी सीबीआई जांच नहीं। इनका दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में हुए नुकसान से भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं आपको, अगर इनका दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में हुए नुकसान से कोई लेना देना होता, इनकी चिंता होती, तो ये इस बात की जांच कर रहे होते कि 2 दिन पहले एलजी ने यू टर्न किसके कहने पे लिया। बहुत बड़ा फैक्ट मैंने दिया है, सीबीआई को लिख के दिया है। पर वो नहीं होगा क्योंकि वो इंटरेस्ट ही नहीं है। इंटरेस्ट अरविंद केजरीवाल को रोकना है। इंटरेस्ट 2024 के चुनाव में इस बात को किसी तरह से रोकना है कि पूरा देश अरविंद केजरीवाल जी को मौका देने पे आ गया तो लोग कह देंगे कि मोदी नहीं चाहिए। मनीष जी, जब बीजेपी लीडर्स अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये हास्यास्पद है कि अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली का मुख्यमंत्री हैं, एक पंजाब में मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी ने जीता चुनाव, गोवा में कुछ नहीं कर पाए, उत्तराखंड में कुछ नहीं कर पाए, तो बीजेपी क्यों बौखलाएगी अरविंद केजरीवाल से? आज हास्यास्पद ये है, और हास्यास्पद से ज्यादा मैं इसको दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री 24 घंटे बैठ के यही हिसाब लगाते रहते हैं, यार किसकी सीबीआई गई थी, 14 घंटे की रेड को 18 घंटे में कैसे बदलूं, जिसके घर 18 घंटे रेड पे कुछ नहीं मिला अब उसको लुकआउट नोटिस कैसे दूं, ईडी की एफआईआर कैसे करूं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जो 24 घंटे यही सोचते रहते हैं कि यार बेरोजगारी, स्कूल, अस्पताल, महंगाई को कैसे कम करें, स्कूल कैसे बनवाएं, बच्चों को और पढ़ाएं कैसे अच्छे से। तो दोनों नेताओं के बीच आज देश में चुनाव होने लगा है, दोनों नेताओं के बीच आज देश में बात होने लगी है। लोग आज बात करने लगे हैं कि यार अरविंद केजरीवाल में बात तो है कि आदमी देश को नंबर 1 बनाता है शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई पे काम करके। मोदी जी देश को नंबर 1 बनाने की बात ही नहीं करते, वो तो मनीष सिसोदिया को एफआईआर में नंबर 1 बनाने की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन मनीष जी, आर यू प्रिपेयर्ड फॉर एन अरेस्ट? आप क्या तैयार हैं कि आपको शायद जेल जाना पड़े, केस लंबा खींच सकता है, और आपकी सरकार और पार्टी के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, हमारा एक कमिटमेंट है, अरविंद केजरीवाल जी का एक कमिटमेंट है, जान चली जाए लेकिन शिक्षा के, स्वास्थ्य के, बेरोजगार के, महंगाई के मुद्दे पे काम करना बंद नहीं करेंगे।
दिल्ली की जनता के काम होते रहेंगे, पंजाब की जनता के काम होते रहेंगे, जान से मार डालोगे फिर तभी काम रुकेंगे, उससे पहले काम नहीं रुकना। बीजेपी का और एक एलिगेशन है, ऑपोजिशन का और एक एलिगेशन है कि जब भी आपको स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछते हैं आप शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में बोलना चालू करते हैं। ना, आपका इंटरेस्ट है करप्शन रोकने में, आपका इंटरेस्ट है एक्साइज पॉलिसी का करप्शन जानने में। अगर एक्साइज पॉलिसी का करप्शन जानना है तो स्पेसिफिक बताओ कि 2 दिन पहले के यू टर्न की जिसकी वजह से इतनी बड़ा नुकसान हुआ उसकी जांच अभी तक क्यों नहीं शुरू हुई, स्पेसिफिक बताओ। Are you completely confident that there is nothing wrong with the excise policy, no corruption, no criminal intent? मैं जानता हूं और मेरा ईश्वर जानता है और मेरे लोग जानते हैं कि एक्साइज पॉलिसी में कोई गड़बड़ नहीं हुई। लुकआउट नोटिस किन परिस्थितियों में जारी किया जाता है? जो व्यक्ति भगौड़ा हो, जो व्यक्ति जांच में सहयोग न कर रहा हो, जिसके भागने की संभावना हो। अरे भाई वो शिक्षा मंत्री हैं, उनको कहीं भी विदेश जाने के लिए कैबिनेट मंत्री होने के नाते पहले परमिशन लेनी पड़ती है केंद्र सरकार से। मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जन्माष्टमी के दिन तुमने 14 घंटे उनकी जांच करा ली। ना वो कहीं जा रहे न कहीं भाग रहे। किसी गलत फहमी में मत रहना भाजपाइयों, ना तो अरविंद केजरीवाल डरने वाले हैं, ना आम आदमी पार्टी डरने वाली है, ना मनीष सिसोदिया डरने वाले हैं, ना हमारे शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल रुकने वाला है। लुकआउट नोटिस उसी के अगेंस्ट जारी किया गया जिसने करप्शन की है। इन्होंने तो शीला दीक्षित जी के लिए, बाकी लोगों के लिए पता नहीं क्या क्या बोला था कि सारा देश ही करप्ट था, और कहां पर पहुंचा उसका वो रिजल्ट। लेकिन अपना जब लुकआउट नोटिस निकला तो अब पैनिक मत होइए, अब जो होगा आगे अब वक्त बताएगा आपको, सीबीआई बताएगी। आप भारतीय जनता पार्टी को और केंद्र सरकार को इस बात से ध्यान हटाने की जरूरत है कि 14 घंटे की रेड के बाद भी मनीष सिसोदिया के घर से उन्हें कुछ भी नहीं मिला। जरा आज बताएं तो सही कि मनीष सिसोदिया के घर से कितने पैसे मिले। सीबीआई बताए तो सही कि कितने सोने के बिस्कुट मिले उन्हें मनीष सिसोदिया जी के घर से। सीबीआई आखिर बताए तो सही कि कितनी संपत्ति के कागज मिले मनीष सिसोदिया के नाम पे, उनके परिवार वालों के नाम पे, उनके रिश्तेदारों के नाम पे। तो हम भी और आप भी मेरे ख्याल से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि उनके घर में कोई कैश मिलने वाला है या कोई गोल्ड मिलने वाला है। तो जो अपना सीबीआई लेने गई थी वो उनको मिल गया, उनका मोबाइल मिल गया, उनके कंप्यूटर मिल गए। बाकी जो जांच होगी, पैसा कहाँ छुपाया हुआ है, अपने घर में तो छुपाएंगे नहीं, कहाँ छुपाया हुआ है वो सारी बातें, सारे लोकेशन सामने आ जाएंगे। अभी तो उन लोगों के खिलाफ में एफआईआर हुई है जो सारे लोग डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व थे, जो इसके बाद में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे। उसके बाद में अभी जो तार जुड़ेंगे, सारी बातें आएंगी सामने, जितने लोगों को सीबीआई बुलाएगी, वो जितने अपने स्टेटमेंट देंगे, उनसे जो तार जुड़ेंगे उसके बाद में उन लोगों के यहाँ पे भी कार्रवाई होगी। Okay, and we're now moving ahead from this story, though it is going to be our top focus through the day today. We're moving now down south, where the ties between the CPIM-led Kerala government and the governor of Kerala, Arif Mohammed Khan, further damaged yesterday after the governor called the Kannur University Vice-Chancellor Gopinath Ravindran a quote-unquote criminal and raised serious charges against him. He accused the VC of conspiring against him and being politically motivated. Remember, though, that this comment comes after a controversy all through last week over the university syndicate now deciding to move the Kerala High Court against the governor's stay order on the appointment of Priya Varghese on the grounds that she's the wife of the Chief Minister's private secretary. So remember, that's a controversy that's been raging on for a week now. This is the latest twist. This is what the governor had to say. Take a look. He's a criminal. He was party to this conspiracy where they wanted to hurt me physically. And that is why I am using strong language. This man, only because, leave aside the appointment of the associate professor, this man is sitting as vice chancellor because of political reasons. He is not behaving like vice chancellor. He is not behaving like an academic. He is behaving like a party cadre.
All right, and further news from down south now, moving from Kerala over to Tamil Nadu, where the legal battle over the leadership over the All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam, or the AIADMK, very much continues. After former Chief Minister E. Palaniswamy snubbed O. Pannirselvam, his deputy's truce bid. Remember, O. Pannirselvam had proposed they both lead together. This is after a divisional bench of the Madras High Court today will hear a plea filed by EPS challenging the single judge order that came out a few days ago. That order, remember, came in favor of OPS. In its order dated August 17, the court asked both the leaders to work together, thus rejecting EPS's solo leadership bid after it seemed pretty much certain that he'd be taking full leadership of the party. Meanwhile, OPS has also extended an olive branch to two other very important factions, Sasikala and TTV Dinakaran. He said that all those working for the AIADMK since the era of the MGR, the senior leader MGR, they all need to come together. Remember, that makes possibly 3 united factions against one other faction, that of EPS. We'll talk more about the future of the party. But first, we're going to move on to another story. This is in the sporting world. While a cloud of uncertainty looms over India's football future, the Supreme Court today will continue considering an application filed by the centre seeking modification of the top court's 3rd August order. According to that order, 36 state federation members and 36 players are supposed to elect an executive committee of the AIFF, or the All India Football Federation, by August 29th. At the same time, the court-appointed committee of administrators has moved a contempt petition. They've asked that and said that the government was misled by state associations and accused former AIFF president and National Congress Party leader Praful Patel of misusing his position as FIFA council member to undermine the orders passed by the court. So it's an incredibly complicated case there that the Supreme Court will be taking a look at. My colleagues will be joining us late in the day to give you a lot more clarity and more of an explanation of exactly what's taking place. For now, that is all that we have for you here on the show. Right before we let you go, August is Financial Freedom Month at Money Control. Under our Financial Freedom offer, you can get a Money Control Pro subscription at net zero cost by claiming exciting offers worth 1,500 rupees from our partner brands. Grab the benefits now only on Money Control's app or website. We'll see you in just a few minutes on the other side of this break for more of the country's top stories. We'll see you in a few minutes. Surat happens to be the worst hit. Roads turned into rivers, resulting in several vehicles getting submerged. Water even entered people's homes, forcing people to move to higher floors. हम लोगों को बहुत तकलीफ होता है, पानी इतना आता है ना. Drone footage shows most of Surat inundated. There is water for as long as the eye can see. Most people remained confined to their homes, but this pregnant woman had to be evacuated from her flooded home. A boat was brought in to take her to a safer location. Nearly 5 lakh people have been affected by devastating floods in Odisha. People were stuck in neck-deep water waiting to be evacuated. Relief and rescue teams have reached maroon villages on boats and they moved people to safety. Incessant rains have triggered floods across the state. Maharashtra is also reeling under heavy floods after rains pounded the coastal districts. Several rivers in Maharashtra are in spate after incessant rains for the last 24 hours. Despite dangerous conditions, this group of people decided to cross a river in Nashik. But the water was flowing so fast that they lost their balance. They held each other's hands and managed to cross the river to safety. Similar pictures surfaced from Vidarbha in Maharashtra. Rainwater left roads flooded and entered several homes. Several people were seen wading through knee-deep water. Teams from the National Disaster Response Force were roped in to evacuate people from flooded areas. A day after he was heckled in Kodagu for questioning the installation of Savarkar posters, Siddaramaiah faced protest in Chikmagaluru as well. Right-wing groups carrying pictures of Savarkar tried to gear out Siddaramaiah's motorcade. The Congress called it a state-sponsored protest.
2 months after Rahul Gandhi's Wayanad office was vandalized after a protest by members of the Students' Federation of India, 4 people, including Rahul Gandhi's staff there, have been arrested. They've been accused of damaging a picture of Mahatma Gandhi in the office. Remember, the Congress had accused the SFI of vandalism. The Sports Ministry has reached out to both FIFA and the Asian Football Confederation. Moving on now to a particularly important international story. The governor of Indiana arrived in Taipei yesterday, becoming the latest US official to visit Taiwan and defying pressure from China for such trips not to happen. Remember, China claims democratically governed Taiwan as its own territory despite the Taipei government's strong objections. It's been carrying out war games and drills near Taiwan since US House Speaker Nancy Pelosi made a 2-day visit to Taipei earlier this month. Now, we're going to tell you more on this entire story. Take a look. What the scholars have been telling us is that the visit of Nancy Pelosi has not only benefited United States, but it will benefit the incumbent government here in Taiwan. Also, now there is a possibility of America signing new agreements with Taiwan in coming future, as China has already imposed sanctions on Taiwan, and Taiwan has been majorly hit economically. So to compensate that, America is likely to sign agreements with Taiwan. America has claimed that this was not a state-sponsored official visit. Nancy Pelosi wanted to come to Taiwan, so she came to Taiwan and met the leaders of the Taiwan. But the fact here remains that very next day, the defense budget of Taiwan was increased, keeping in mind the military exercises that were being carried out by China around Taiwan. So now, as defense budget of Taiwan has increased, so Taiwan is surely going to buy the weapons from United States of America. Colleague Siddhant, who we've got on the ground right now in Taipei, he also spoke to the Indian fellow and Chinese scholar Roop Narayan Das on the possibility of war between China and Taiwan. Take a look at that conversation. Roop Narayan ji, my first question to you is war with China on the cards? Is there a possibility of war with China? Not today, not tomorrow, but in some months from now? Well, I think, as you said, certainly not today, not tomorrow, but sometime or other. When Nancy Pelosi visited Taiwan on 3rd of August, but I was there that day in Taiwan itself, I think Pelosi's visit provided a pretext to China to sort of indulge in military adventurism. That was simply a pretext. China has said earlier that under 3 conditions they can consider invading Taiwan. First, if Taiwan goes nuclear. Second, if Taiwan gives military base to foreign forces. Third, most importantly, if China formally declares independence. Pelosi's visit doesn't come under any of these categories. National unification of Taiwan with China is a major goal of the Communist Party. And now the Communist Party has also aroused the Chinese people that it is an objective. So this is a very sensitive, in fact, it is one of the core interests of the Chinese foreign policy. Now there is an attempt by China, even China, to weaken the economy of Taiwan. As a result of which, now the USA has to
increase the trade, bilateral trade. Maybe it is in the interest of USA to sort of create this kind of a tension between China and Taiwan, because that helps their military-industrial complex. You'll agree with me, that helps their military. Yeah, okay, absolutely. Of course, I agree. Without the defense support, security support of USA, China can attack Taiwan anytime and get its way. It's possible. But just because of USA, it is not possible. We'll be connecting with Siddhant later in the day to understand more about the ground situation in China. We're going to move on. We're also going to understand more about the ground situation in Taiwan. Right now, though, we're going to move on to a different story. Tech giant Apple has recently come across cases of several iPhones being hacked. An urgent update message, and if you fall for it, the hackers will take over your phone and details. Watch more on this. This is a special report by CNN's Isabel Rosales. Take a look, and that is the last thing that we have for you on this show. Update your devices right now. That's Apple's urgent warning after discovering a vulnerability in its operating systems. What does this all mean? I mean, among vulnerabilities in the computer world, it's pretty severe. On a scale of 1 to 10, it's an 8 or a 9. When Roger Grimes, a cybersecurity pro with 3 decades working at companies like McAfee and Microsoft, tells you to pay attention, you listen. It's a pretty big, severe vulnerability. At its core, Apple's security flaw could allow a hacker to take full admin access of your iPhone, iPad, and Mac. They can inject and install more malicious software. They can read your data. They can send, people that you trust. They can send emails and messages and even calls seeming to be from you. The tech giant says the flaw may have been actively exploited and is present in many products, including iPhones as old as 6S. How common in the cybersecurity world is it to have a large company such as Apple admit to this type of security flaw? It's not uncommon. And the reality is that it's always been this way. Apple is already offering this emergency software update. Grimes warns, don't ignore it. There will always be some, percentage of people, 10, 15% of people that will be very late in patching and be susceptible to this. And in the meantime, be wary of any unusual messages, even from friends, asking you to download or click anything. It'd be a good practice for everybody to get a healthy culture of skepticism.